Good morning, good morning, all of you. Good morning, Afrin. Am I audible? Is slide visible? Please confirm those who are online. Slide visible अच्छी की slide visible नहीं. Okay, so today is 22nd August. Slide I think visible हबो आपण मानको. Good morning, all of you. Still slide visible होनी, right? Okay. Let me restart it again. Okay.
Okay, fine. I think now everything is fine. Audio and video. That means slides are visible. Okay. So today is 22nd August and we'll discuss national and international news. Sorry for this technical inconvenience. Please cross check. Now it's visible to everyone. I hope it's fine for everyone. Okay, thank you. Everything is fine. So today is 22nd August. So let's start discussion. Let's see the headlines of today's China-Pak new economic corridor. NATO is the second news. Third, GST reform. Fourth, first ever Khelo India Water Games. Fifth, first fully digital literate state. And sixth, Polavaram project. Okay, so these are the national international news, and apart from this, we have Odisha related news as well, and we'll see few MCQs. So let's start. First of all, China-Pak economic corridor. Please share this session with your friends as well. Those who were online, but due to this technical issue, they left it. So please convey the message. We have already started. So China-Pakistan Foreign Minister agreed to launch new corridor projects. So we'll see what exactly the news. Pakistan and China pledged to expand economic cooperation and investment under China-Pakistan Economic Corridor, a flagship program of China's Belt and Road Initiative. So in this particular news, two things are important. ये first होची आपनकर China-Pakistan Economic Corridor, सेटा कोण हमें discuss करिवा. And the second one would be China's Belt and Road Initiative. I think you must have seen in the news कि China रे जो foreign minister थिले, से India रे visitor थिले, and just after completing the Indian visit, he went to the Pakistan. So there he had this meeting, and they are launching the second or phase 2 of the China-Pakistan Economic Corridor. Okay, so what exactly this China-Pakistan Economic Corridor, or say phase 2 kono, what would be the new updates, and ये China Belt and Road Initiative kono देखिबा. First देखिबा China-Pak Economic Corridor. China-Pak Economic Corridor को 2015 रे लॉन्च करा जाइथिला. China-Pak Economic Corridor को 2015 रे लॉन्च करा जाइथिला, and it was part of the Belt and Road Initiative. BRI को आज Belt and Road Initiative. एवं एटा कनेक्ट कहा को करुथिला जिनजियांग चाइना रे जो प्रोविंस अछि, खास करके साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना नेम जिनजियांग प्रोविंस, and with the Gadwar port जोटा कि पाकिस्तान रे अछि, through highways. That means it's a multimodal project. Highways, railways, pipelines, and power projects. And what would be what was the investment amount आपण देखि परिबे? $62 billion रुबी अधिका ई प्रोजेक्ट रे they have spent. Recent development कोन होची देखिबा 2025 रे both countries reaffirmed commitment to phase 2 of CPEC, that is China-Pakistan Economic Corridor, focusing shifting from infrastructure and energy to industrial cooperation, agriculture, digital economy, and green development. These are the different like components would be part of that project. China plans to enhance FDI in Pakistan, foreign direct investment, especially in the special economic zones. Special economic zones we have, I think we have discussed multiple times. But a special zone था जोटे कि manufacturing units गुड़ी को set up करा जाए, be it product manufacturing unit or services manufacturing unit, and they are specially treated. Okay, within the particular territory they are specially treated. I mean, those manufacturing industries are specially treated. They get benefits with respect to tax incentive, let's say income tax exemptions, subsidies, all those things they get the benefit. So Pakistan seeks Chinese help in tackling power shortages. कारण अपन यदि पाकिस्तानी इकोनॉमी को अपन देखिबे, it is facing multiple such problem. जेमती power shortages अच्छी, financial crisis अच्छी, they need industrial revival for the enhancing GDP and employment opportunities in their countries. So they are taking the help from China. Okay, then this project would be a kind of a boon for Pakistan. But there are strategic significance कोण देखंतु काहेकि why India is concerned about it. Strategic significance होची for Pakistan जदि आपण देखिबे, it is critical for the economic revival. कारण ऑपरेशन सिंदूर पर भी they need a lot of money for the revival
for their infrastructure, revival of their army kind of strength, etc. So economic revival, infrastructure, energy security. As far as China is concerned, they need access to Gadwar port. कारण आपण जानिथिबे गद्वार पोर्ट गोटे जोटा अछि सेटा पाकिस्तान रे चाइना ही बिल्ड करिछि. सो चाइना वांट्स द कनेक्टिविटी. गद्वार पोर्ट, Arabian Sea, Indian Ocean, strengthening China's foothold in the South Asia. That means China रो गोटे कंट्रोल आसीबो, ग्रिप ओवर द सिचुएशन इन साउथ एशियन रीजन. कारण चाइना रो जो एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट अच्छी या चाइना जो आंबिशन अच्छी कि टू कंट्रोल जमती ए देखिए आपंकर यूएस रो जो टाइप रो हेजिमनी अच्छी यानी कि डोमिनेंस अच्छी द सिमिलर काइंड ऑफ डोमिनेंस चाइना विल हैव इफ दे विल हैव एक्सेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साउथ एशिया रीजन पर्टिकुलरली एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखिए ऑलमोस्ट से पूरा एशियाई रीजन ने से निजर डोमिनेंस देखा चाहूँ. बट जो मुझे आपको कही कि वाई इंडिया इज सो मच कंसर्न अबाउट इट. आप देखूँ ये जो पार्टी अच्छी आप देखिपारे ये कसघर रू स्टार्ट ही. आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई थ्रू माई पॉइंटर. ये देखो ये गिलगित रे कनेक्ट होती एंड दिस पार्ट इज योर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और द POK रीजन. राइट एटा हूँ इंडिया पार्ट आम जाचे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पार्ट देकी ये जो आपंकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आसिकी फाइनल से टच करिछि गद्वार पोर्ट रे. So what India is saying it's simply violation of India's sovereignty. Kahinki violation of India's sovereignty? The reason is this is a disputed region, number one, and India always claims this is part of Indian territory and illegal occupied by the Pakistan. So how can a country give access to another third country or third party like China to build the infrastructure or connectivity with respect to जो economic corridor होचे आपनको. Okay, so that is the reason India is concerned about. It's the straight violation of India's sovereignty and it also threat to India बोले अपन सीधा कही परिबे. तेणु से ये 2015 रु ही एलिगेशन इंडिया चाइना उपर लगे आसी कि सॉरी पाकिस्तान उपर सिंस दिस इज अ डिस्प्यूटेड रीजन इन पाकिस्तान शुड नॉट गिव एक्सेस टू चाइना. राइट, दिस इज नंबर वन पार्ट. नंबर टू पार्ट हूँ जदि फेज 2 तार कंस्ट्रक्शन करा जाए डेफिनेटली इट वुड बी काइंड ऑफ कौन चाइनीज धीरे धीरे डोमिनेंसी रीजन आहरी बढ़ी बढ़ी चलो. ऑल्दो from past few months, past few days, we have seen a improvement in the China-India relation, but still China को we cannot predict or India cannot predict the behavior of China, unpredictable China as far as Indo-China relation is concerned. कारण China रो हमें unpredictability सबले देखी के आसुचु से डोकलाम आपनकर stand up हो या गलवन वैली क्लास हो, we have seen what China speaks does not reflect in the action. ये होची China nature. So we cannot believe on China. Second aspect होची Belt and Road Initiative गोटे नुआ component मैं आपन को introduce करी चेठी. Belt and Road Initiative कौन? It's a Chinese जे premier जो तंगर जो president अभी जो अछंदी Xi Jinping. This is his what you call ambitious project. It was launched by China in 2013. खास करके अपन जानी थे एंशियंट टाइम रे सिल्क रूट थिला गोटे थिला मैरीटाइम सिल्क रूट, अनदर वन इज द टेरेस्ट्रियल सिल्क रूट. टेरेस्ट्रियल सिल्क रूट टी आपनकर सेंट्रल एशिया रीजन देकी आपनकर एशियाई नेशन को कनेक्ट करिथिला एंड मैरीटाइम सिल्क रूट होची जोटा आपनकर अरेबियन सी देकी कनेक्ट करिथिला. So what China wants to revive, and China was part of that silk route or silk trade route. So what China wants to revive that silk road trade route. kind of ancient cultural जो on the name of this ancient or cultural revival, China wants to have a control all over the region, exactly the terrestrial and this maritime silk route जो connectivity or route रे से निजर control रखिवा को चाहूँ. So what China wants to promote connectivity, trade, infrastructure. कारण China is having lot of money and China is ready to invest lot of money in the infrastructure project as well. तो जो countries गुड़िक खास करके underdeveloped and poor countries, they are allowing China to like build infrastructure and because they will be benefited. They do not have to compete with the China, but they have to survive, they have to develop their economy.
But as far as India is concerned, India is competing with the China in terms of ideological difference देखिए कारण चाइना हूँ गोटे कम्युनिस्ट कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आम देखुचे चाइना एवं इंडिया सहित 1960s रु वी हैव ए बैड रिलेशन। तो से केस को नहीं कि चाइना ठू आमको फ्रेंड्स एंड एनिमी दुईटी जाक डायमेंशन रू आमको असेसमेंट करने को पड़ो। सो व्हाट इंडिया वांट्स, इंडिया चाहूँगी कि एक तो सेफ एंड सिक्योर एक तो टेरिटोरी कारण जेहेतु पीओके रीजन पड़े। सेकेंड आस्पेक्ट इज इंडिया हैज नॉट जॉइन दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टिल नाउ। मन रखती बेटा को इंडिया बर्तमान सुधा भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जॉइन करी नाही। द रीजन हूँ व्हाट इंडिया परसीव्स कि जदि आम बेल्ट रोड इनिशिएटिव कले तेज डेफिनेटली चाइना विल इन्वेड इन द टेरिटरी ऑन द नेम ऑफ ट्रेड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड धीरे धीरे से तार डोमिनेंसी देखा स्टार्ट करियो। सो फॉर दैट रीजन इंडिया इज स्टिल अवे फ्रॉम दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मेन कंपोनेंट्स देखिए एक तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जोटा कि लैंड बेस्ड टेरिस्ट्रियल पार्ट मु कही आपन को सेंट्रल एशिया रीजन को यूरोप आउ एशिया सहित कनेक्ट करूला। इट हैज हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइन्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एक्सेट्रा। एंड 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट जोटा कि आपणकर अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी सहित यूरोप आउ एशिया सहित कनेक्ट करूला। इनफैक्ट साउथ चाइना सी को भी कनेक्ट करछि विद द इंडियन ओशन। पूरा एंटायर रीजन जोटा कि ट्रेड आपणकर चली। तो से जगार भी चाइना इज इन्वेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ पोर्ट जदि आप देखिए जमी पाकिस्तान ने से इन्वेस्ट कर गद्वार पोर्ट। यू कैन कम टू दैट श्रीलंका आपणकर अच्छी हाम्बनटोटा पोर्ट। बांग्लादेश रे आपन देखिए सेठी अच्छी चिटागंग पोर्ट। म्यांमार रे आपन देखिए सितवे पोर्ट से बिल्ड करिछि। सो दीज आर द पोर्ट्स जोटा कि मैरीटाइम सिल्क रूट को रिवाइव करने चाइना इज बिल्डिंग सच पोर्ट्स एंड ऑल। आई थिंक किस दिन पूर्व वी हैव ऑल्सो सीन इन द न्यूज़ दैट चाइनीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और चाइनीज काइंड ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद आफ्रिका तक को कंसिडर करुच्ची एज ए डोमिनेटिंग पार्टनर। एवं वी हैव सीन दैट द डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज दे हैव डिसाइडेड टू कैंसल द प्रोजेक्ट विद द चाइना। द रीजन हूँ द नेचर ऑफ चाइना हूँ कौन डोमिनेटिंग से इक्वल पार्टनरशिप रे केवे ट्रेड करते ना से डोमिनेटिंग एंड हेजिमोनिक पावर आप कहींपर खास करके द साउथ एशिया रीजन में। ओके सिग्निफिकेंस फॉर चाइना ओबियसली चाइना बेटर हूँ जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तार रहिबो, कंट्रोल रहिबो, नेचुरल रिसोर्सेज मार्केट उपर कंट्रोल रहिबो। चाइना कैन एक्सप्लोर अल्टरनेट ट्रेड रूट जो कि से बिजनेस करिपरिबो। तार जो लाइक वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज अच्छी, इंडस्ट्रीज नेटवर्क अच्छी, तार प्रोडक्ट को से एक्सपोर्ट करिपरिबो एंड कैप्चर द मार्केट ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। प्लस युआन जोटा तार करेन्सी अच्छी ताको इंटरनेशनलाइज कर दे परिबो। जमती आज आम डॉलर को देखुचे, डॉलर इज समथिंग हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट। से टाइप रो युआन रे भी गोटे टाइम रे इंटरनेशनल मार्केट रे ट्रेड हो परिबो एंड दैट इज पॉसिबल इफ more and more countries will start like trade partnership with the China and use this yuan which is the currency of China. Next देखिए NATO को नहीं की न्यूज़ रही स्वीडन टू होस्ट NATO ट्रूप्स लॉजिस्टिक्स बेस। एटा देखिए कौन तो पर्टिकुलरली आम कि NATO को कौन देखा कारण आमर प्रिलिम्स रे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज देयर इन आवर सिलेबस। सो देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी से मैंने NATO को लेकिन क्वेश्चन पचारि पारन। सो NATO के फॉर्म करागला देखो इट वाज एस्टाब्लिश्ड इन 4th April 1949 नोन एज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और जहाँ को इन शॉर्ट वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाए। यार हेडक्वार्टर कोटी देखो ब्रसेल्स बेल्जियम रे। ओके केतोटी मेंबर अच्छा 32 कंट्रीज एज ऑफ 2024 एवं 2024 एवं ये को मैंने मेंबर अच्छा देखो लेटेस्ट फिनलैंड एंड स्वीडन। नेचर कौन देखो कलेक्टिव डिफेंस अलायंस। यार नेचर हूँ कलेक्टिव डिफेंस अलायंस एगेंस्ट आर्म्ड अटैक। व्हाट इज द कलेक्टिव डिफेंस अलायंस? कलेक्टिव हूँ इफ attack is on a particular country that would be considered as a attack on NATO. It's not that कि suppose Sweden ऊपर attack है, it's a attack on Sweden only and Sweden will deal with that. That is not the case. If you are part of the NATO, that means attack on one member is considered as the attack on the whole bloc, that is the whole military alliance जोटा कि हमें NATO बोली कहूचे।
in NATO formation 1949 जो मैं आपको सहित मेंशन कली, and it was the time when the Cold War started. କାରଣ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. वी हैव टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज. वन इज द USSR लेड सोशलिज्म जोटा थिला एंड US लेड कैपिटलिज्म थिला, एंड वी हैड दिस କ'ଣ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पर्टिकुलरली. तेणु US लेड जो ब्लॉक थिला अलायंस थिला सेमाने तैयारी कले नेटो, एंड USSR वाला तैयारी कले वार्सो पैक्ट. ऑल्दो वार्सो पैक्ट इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ और इट्स सिंपली phased out or discontinued, but NATO is still there. and NATO पछरे जो पूरा स्टोरी आपण देखिए नाटो को ही नहीं कि यूक्रेन रशिया रो वॉर भी आपणकर चली, बट कहीं ना यूक्रेन वंस आई मीन यूक्रेन वाज इंटरेस्टेड टू जॉइन द नेटो, ऑल्दो फॉर्मली जॉइन तो है ही नथिला. सो इट वाज काइंड ऑफ ए सस्पिशियस फॉर द रशिया कि इफ यूक्रेन जॉइन्स द नेटो ताମାନେ ନେଟୋର ମିଲିଟାରୀ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିବେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରହିବେ. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଦ ରଷିଆ. ଆଣ୍ଡ ରଷିଆ ଏ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତା'ର ହିଷ୍ଟ୍ରି USSRକୁ ନେଇ. ତ ଇଏ ମେଜର ରିଜନ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ୍ ଟେନସନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି. ଓକେ, ନେଟୋର କି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଛି. ଆର୍ଟିକଲ୍ 5 କହୁଛି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡିଫେନ୍ସ. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ an armed attack on one member is considered an attack on all. ओके, ये हूँ नेटोर सबुठू फाउंडेशनल वैल्यू और फाउंडेशनल प्रिंसिपल आप कहींपर. एंड आर्टिकल 4 जदि आप देखिए, मेंबर्स कंसल्ट ईच अदर व्हेन देयर सिक्योरिटी इज थ्रेटेन्ड. ओके, एंड द डिसीजन इज टेकन ऑन द कंसेसस मेथड. यूनिलैटरल ऑब्वियसली नुहे, कंसेसस मेथड यानी कि समस्त राय नेला पोरे दे टेक डिसीजन रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट देखिए रियल मनी गेम बैन बिल. सो आम देखीचे कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू बिल, एंड दैट बिल वाज डीलिंग विथ कि जो ऑनलाइन गेम्स गुड़िक अच्छी एंड दे आर यूजिंग द रियल मनी. ओके, दैट मीन्स आपण जमती ड्रीम 11 क्रिकेट आप टीम बनाऊे एंड मिनिमम 50 रुपीज रो आप पैसा इन्वेस्ट या यूज करें 50 एंड देन प्लस प्लस. सो ये जो रियल मनी जो गेमिंग एप्लिकेशंस गुड़िक अच्छी समीर नो नाटो रे मेंबर इंडिया नहीं, एंड देन खास करके आपनकर US लेड जो 32टी कंट्री अच्छी से इंडिया नहीं. ओके, तो रियल मनी गेमिंग यानी कि जो रियल करेंसी या रियल मनी को जो बिल जो ऑनलाइन एप्लिकेशन यूज करूँ सिंपली दैट हैज़ बिन बैंड. ओके, बाय दिस न्यू बिल जोटा कि लोकसभा द्वारा पास होता, नाउ राज्यसभा हैज पास्ड, एंड फाइनली इट विल गिव द it will get the assent of president, and finally it will become an act. The Rajya Sabha has passed a bill banning real money gaming firms following growing concern about addiction, financial fraud and consumer protection. खास करके जो teenager माने थिले सेमाने they are losing money, and there are rackets or groups or the scams जो माने कि fraudulent करूथिले, and they are simply wiping out money from these vulnerable fragile group. Okay, the bill seeks to regulate online gaming platform that involve wagering and betting with monetary stakes. जमते आम देखी IPL चलता एपटे ड्रीम 11 चलता. ओके, एंड पीपल वर अर्निंग मनी इवन 2 to 3 days गोटे गोटे न्यूज आसूला दिस पर्सन फ्रॉम दिस एरिया हैज गॉट द 1 lakh rupees और 1 crore rupees से जीतला. तो ये टाइप न्यूज था, एंड विच वाज आई मीन यू डू नॉट नो एक्चुअली से न्यूज रो केते ऑथेंटिसिटी अच्छी, कुड बी अ फेक न्यूज और समथिंग, बिकॉज और डेलिबरेटली दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग दैट मनी टू ए पर्सन. द रीजन हूँ कि बाकी को एनकरेज कर टू इन्वेस्ट इन दैट, सो दे कैन ऑल्सो गेट दैट मनी. तो ये प्रॉपर गोटे टीम वर्क या गोटे स्कैम टाइप रो चली. सो दिस इज समथिंग व्हाट गवर्नमेंट ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट इट, एंड गवर्नमेंट डिसाइडेड लेट्स बैन दिस involvement of real money in those games or gaming applications. Features of the bill देखिए, first of all definition distinguishes between permissible online games. Permission कोटा अच्छी जमते आमर आगुरु भी थिला, permission online gaming आगुरु भी थिला, but in that online gaming you won't have to pay money. तो जो जगह money involved थिला, gambling, betting, real money involved थिला, ताको बंद कर दिया गया. Ban on real money gaming prohibits offering, advertising, operating online games of chances with monetary stakes, applies to both domestic and foreign companies operating in India. ओके, तेणु जेकोसी प्रकार गेम जो रियल मनी इनगेज थिला ताको बैन करागला. नंबर 1.
It could be a domestic company operating in India or a foreign company operating in India. So any such platform जोटा कि इंडिया कस्टमर मानक शो करुच्ची कारण आप भाविए कि सर ऑनलाइन तार फिजिकल एक्जिस्टेंस तो नहीं ऑफिस रो, इट्स सिंपली ऑपरेटिंग ऑनलाइन. हाउ कैन यू एनश्योर कि भाई ये हूँ इंडियन कंपनी नुहे फॉरेन कंपनी को बैन करो, बिकॉज इंडिया नेटवर्क जो डोमेन अच्छी जदि इंडियन कस्टमर मान को डील करुचे से कंपनी, दैट मीन्स दे विल बी बैंड. ओके. रेगुलेटरी अथॉरिटी ए सेंट्रल ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटर विल बी सेटअप जे कि कौन करिवो लाइसेंसिंग इश्यू करिवो, मॉनिटर करिवो कंप्लायंस को एंड एनफोर्सिंग पेनल्टीज मध्य एनफोर्स करिवो. पेनल्टीज देखिए यदि हेवी फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर कंपनीज रनिंग इलीगल बेटिंग एप्स. ओके. प्रोटेक्शन मेजर सेफगार्ड्स अगेंस्ट गेमिंग एडिक्शन. ओके. जो स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रंस दे आर एडिक्टेड टू द गेम, एज रेस्ट्रिक्शन रहिबो एटलीस्ट 18 years एंड अबव कुड बी द मैंडेटरी प्रोविजन, और डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गेम आपण एज रेस्ट्रिक्शन रखिपारे. एंड मैंडेटरी KYC, दैट इज नो योर कस्टमर. ओके. वाई द बिल, कहीं ये बिल अणागला? फर्स्ट ऑफ ऑल, rising concern, increasing number of youth getting trapped in the online betting and fantasy gaming apps. Okay, online betting and fantasy gaming रे समान engage रहउछन. Legal vacuum, कोनोसी से बड़ी single law नहीं which is dealing with such new emerging field. Consumer protection would be another to prevent financial fraud and exploitation. If you see the cyber safety or security, money laundering and Chinese farms, ये भी आपंकर एक्टिव अच्छा जो कि आम चाहूँ ताकू बैन करने. देखो मिनिस्ट्री आपण सिंपली कहीपर कि जमती कारण लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसी नाला से वी हैव डिसाइडेड कि गोटे पर्टिकुलर एजेंसी आम करवा जो मैंने कि लाइसेंसिंग लाइसेंस देवे से आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग द प्रपोजल ऑफ द एप्लिकेशन. आगु कौन सी जमी आप गूगल स्टोर रे या सॉरी जो प्ले स्टोर या आपंकर जो एप्लिकेशन डाउनलोडेड जो स्टोर अच्छे से इजिली अवेलेबल अच्छी एंड यू सिंपली डाउनलोड इट एंड यू स्टार्ट यूजिंग. तेणु कौन से भाई कंट्रोल नाला, कौन सी ना अथॉरिटी मिनिस्ट्री से भाई कंट्रोल तापर नाला. कहीपर कुड बी IT मिनिस्ट्री हो पारे, बट से भाई एक्सप्लिसिटली कौन सी एजेंसीज नाला जी कंट्रोल करे. सो नाउ वी हैव डिसाइडेड लेट्स मेक ए प्रॉपर एजेंसी जे कि रेस्पॉन्सिबल रहिबो फॉर दिस लाइसेंसिंग एंड ऑल. ओके. एनीवे, implications देखिबा फॉर इंडस्ट्री. स्टार्टअप्स एंड गेमिंग फर्म्स एट ए क्रॉस रोड नीड टू रिस्ट्रक्चर टुवर्ड्स स्किल्ड बेस्ड गेम. स्किल्ड बेस्ड गेम ऊपर हमें एम्फासाइज दे परिबा एंड गेमिंग कुड बी एनीथिंग एक्सेप्ट द मनी. ओके. रियल मनी जो इन्वॉल्व ताकू छाड़ी एनी सच गेमिंग may impact India's $3 billion online gaming industry को है पारे. तो रीजन हो देयर आर मल्टीपल सच कंपनीज जो मैंने कि रियल मनी को नहीं की प्ले करूले. एंड फॉर कंज्यूमर सेफर एनवायरमेंट, रिड्यूस एडिक्शन, फ्रॉड एक्सेट्रा. फॉर स्टेट्स ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी बट मे क्लास विद द स्टेट पावर्स ऑफ द गैंगलिंग लॉज. ओके. तो आपंकर जो स्टेट पावर्स ओवर गैम्बलिंग लॉज जो अच्छी कारण गैम्बलिंग जो जिनसटी अच्छी सेटा स्टेट लिस्ट रे आसुची, बट एठी लॉ की नहीं के आसला, यूनियन लेके आसला, यानी कि पार्लियामेंट नहीं के आसला. सो जो फेडरल स्ट्रक्चर अच्छी ताकू अंडरमाइन करी पारे. ओके. नेक्स्ट, GST रिफॉर्म. सिंप्लीफाइड टू रेट GST स्ट्रक्चर गेट्स group of ministers nod. Let me tell you this few lines about the group of ministers. When not UPI, UPA 1 or UPA 2 were there, I mean the Congress government basically, during that time you will find this concept of group of ministers. Okay. What is this group of ministers? Group of ministers the council of minister and headed by the prime minister. But group of ministers होचंदी जो माने senior most members of the council of minister, 3 to 4 5 members, they come forward and they form a group of ministers.
and they will take that decision. I mean, a certain matter will be referred to that group of minister. ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वाला कॉन्सेप्ट आगुरी नाला ये यूपीए समय बहुत चली बट नाउ आई थिंक आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एनडीए एरा जदि हम 14 to 24 भितर देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्सेप्ट किसी नाला व्हाट एवर डिसीजन इज टेकन दैट इज फ्रॉम द पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बट दिस इज समथिंग फर्स्ट टाइम जोटा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को रेफरेंस दि जाइए गोटे इश्यू या गोटे मैटर एनीवे तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होती सिंपली आप जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स माने थांती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से गोटे ग्रुप फॉर्मेशन करा जाए एंड दे विल हैव ओपिनियन बिकॉज दीज आर द एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर्स they have experience on diverse field different domains so they share their experiences with the particular ministry or particular department. Let's say GST is dealt by the finance ministry. Okay, so group of minister and GST reforms has approved simplified two-rate GST structure. दुईटी GST structure को simplify करा जाइए. एम कौन अच्छी रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी रिमूविंग टैक्स डिस्प्यूट एंड मेक जीएसटी मोर बिजनेस फ्रेंडली. ओके, करंट स्ट्रक्चर देखु 4 मेन स्लैब्स अच्छी गोटे अच्छे 5%, 12%, 18%, 28% प्लस सेस एंड द लग्जरी एंड सीन गुड्स. गोटे अच्छी बहुत एक्सेप्शनली 40% is there. Okay, and what is that 40%? 40% is regarding आपनकर जो टबैको सिगरेट्स ये सब 40% वाला भी अच्छे. ओके, एनीवे तो व्हाट गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग गवर्नमेंट को 28% स्लैब को एक्सेप्ट द सीन गुड. सीन गुड हूँ आपनकर जमती मुझे कहली टबैको पान मसाला सिगरेट्स ये सब सीन गुड को आ जाऊँगी. सो 28% को आम मर्ज करूँ 18% रे एंड 18% वाला को आने मर्ज करूँ 12% रे. ओके, तेणु ये गोटे प्रपोजल अच्छी. एक्चुअली दिस प्रपोजल हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द इंडिपेंडेंस डे एंड आई थिंक बिफोर दिवाली द गवर्नमेंट विल कम विथ दिस न्यू स्लैब रेट एंड इट्स अ गिफ्ट फॉर द इंडियंस. टू रेट स्ट्रक्चर देखिए, एक तो लोअर रेट फॉर एसेंशियल गुड्स and services merging 5% and 12%. Standard rate most goods and services merging 18% and 28%. तो आम पाखे ब्रॉडली दुईटी जोटा रहिबो 5% वाला तेणु 12% रु किछि जाकि 5% मिसिଯିବ ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट्स वी आर एक्सपेक्टिंग एंड स्टैंडर्ड रेट रो जो 28% वाला थिबो सेतपई आसिक 18%. आपण देखिबे जो बहुत गुड़े यूट्यूब चैनल से मैंने कहते कि द कार प्राइस विल कम डाउन. वाई? बिकॉज कार रे आम 28% दूचे जीएसटी प्लस डिपेंड्स ऑन द इंजिन साइज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कार सेस भी इम्पोज करा जाउछि. सेस मीन्स व्हाट जोटा कि फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस ए पर्टिकुलर अमाउंट वुड बी कलेक्टेड बियॉन्ड द टैक्स. ओके, तेणु से जिनस को बर्तमान जेहेतु ताको 28 रु 18 को कर दिया जीवो सो देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी द कार प्राइस विल कम डाउन. खास करके जोटा मिड सेगमेंट या एंट्री लेवल कार गुड़िक अच्छी यानी कि नॉन लग्जरी कार कारण लग्जरी कार मान तो सेठी सेस से टाइप रही आपनकर खास करके रहिबो जदियो 18% सेठी रहिबो बट सेस रो लेवल से टाइप रो अधिका रहिबो सो दैट ताको कंपेंसेट जेमती करि परिबे गवर्नमेंट. ओके, वाई दिस रिफॉर्म? एक तो सिंप्लीफिकेशन आम आगुरी भी मल्टीपल टाइम वी हैव डिस्कसिंग टैक्स जिते सिंप्लीफाई हम से टैक्स बेस विल इम्प्रूव्ड. ओके, टैक्स बेस विल बी इम्प्रूव्ड मीन्स मोर नंबर ऑफ पीपल विल कम अंडर द टैक्स ब्रैकेट एंड ऑटोमेटिकली द टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन वुड बी इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट. सेकेंड वुड बी द प्रेडिक्टेबिलिटी इन द सेंस कि जिते सिंप्लीफाई प्रोसेस हम सिस्टम हम से आपंकर इजी हम इन द सेंस कि डिस्प्यूट कम हम. ओके, कॉम्प्लेन्स इन द सेंस कि जमती टैक्स स्ट्रक्चर जदि या टैक्स रेट जदि लो रहिला डेफिनेटली मोर पीपल विल कम फॉरवर्ड वॉलंटरली टू पे द टैक्स. एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिस मोस्ट कंट्रीज हैव 1 or 2 GST or VAT rates. We have multiple tax slabs 5%,
12%, 18%, 28%, 40% पर्यंत भी अच्छी। तो से जिनस कहुच्छे कि जिते सिंप्लीफाई करवा टैक्स स्ट्रक्चर से इजी हम, कारण देर आर आई थिंक आप देखिथे समस्ते से कथा कहते कि टैक्स टेररिज्म इज देयर इन आवर कंट्री, सो वी नीड टू रिवाइज द टैक्स रेट। ओवरऑल जीएसटी विषय आइडिया ना 1 जुलाई 2017 वन नेशन वन टैक्स टू मेक वन मार्केट इनफैक्ट। कारण आगु कौन होता जमी पेट्रोल प्राइस आप देखिए, यू विल विजिट डिफरेंट स्टेट्स, यू विल गेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिफरेंट, सेमती लिकर भी प्राइस डिफरेंट कहीं ना पेट्रोल आउ लिकर उपर आज भी वैट इम्पोज करा जाउची एंड स्टेट पाखे जेहेतु तार कंट्रोल अच्छी पावर अच्छी से लिकर प्राइस वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, पेट्रोल प्राइस वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हाउएवर जदि जीएसटी अंडर आप देखिए आप जेकोसी स्टेट को जाती यू विल फाइंड द सेम रेट कहीं सेम टैक्स स्ट्रक्चर आमर अच्छी। सो वन नेशन वन टैक्स या वन मार्केट हिसाब से आपरे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 रे को पास करा जाइथिला। Inserted in 246A empowers the state and center to make law on GST, 279A GST Council and 269A that is levy and collection of interstate GST on interstate supplies। आ गोटे लास्ट फीचर मुझे कहि जीएसटी रिफॉर्म रो ये हूँ आपंकर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। व्हाट इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? आइडियली आगु कौन होता जो प्रोड्यूस होता प्रोडक्ट से जगह टैक्स को इम्पोज करा जाउतला, बट नाउ इट्स डेस्टिनेशन बेस्ड जो कंजप्शन करा जिवो। फॉर एग्जांपल मु आपको देवी, सपोज हरियाणार हिसार रे मारुति इज प्रोड्यूसिंग द कार, इफ द कार प्रोड्यूसिंग कंपनी से प्रोड्यूस कला बट कार इज सोल्ड इन ओडिशा, तेज टैक्स कोठी पे करा जिवो इन ओडिशा, बिकॉज दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजप्शन बेस्ड। तेणु गोटे स्टेट रो टैक्स कलेक्शन डिपेंड करूनी कि से स्टेट रे केते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अच्छी, ता ऊपर डिपेंड करुच्ची से स्टेट रे केते कंजप्शन होची। सो दैट इज द रीजन इफ यू सी द लार्जर स्टेट्स से माने कहउचंदी वी हैव facilitated the setting of different industries, but still in terms of tax collection we are at a lower side। कहीं नाम पाखे अधिका इंडस्ट्रीज थी कि आम टैक्स कलेक्ट करूँ, कारण टैक्स कलेक्ट से जगह होची जोटी आपंकर कंजप्शन होची। ओके, कंजप्शन बेस्ड टैक्स से कहुच्छे, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहुच्छे। ना कमिंग टू द जीएसटी काउंसिल, द चेयरपर्सन इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ऑब्वियसली द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी किए अच्छा निर्मला सीतारमण, सो सी इज द chairperson of the union finance minister। If you see the members, union minister of state from the finance and finance ministers of all states and UTs, they are the members। Decision making capacity if you see in the GST regarding a particular issue, weighted voting अच्छी कहीं ना जेहेतु states को अधिका preference दिया जाउची, prioritize दिया जाउची in terms of what cooperative federalism और जोटा कि गोटे फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस देकी, कारण गोटे कंप्लेन आसे कौन जमी आप आगु जो सेंट्रल एजेंसी गुड़िक था प्लानिंग कमिशन हो एंड अदर सच एजेंसीज कहला कि यूनियन इज डोमिनेंट इन दोज सेगमेंट्स। तेणु से जीएसटी जो रिफॉर्म या जीएसटी काउंसिल जो अणागला से कहगला वी मस्ट इनश्योर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दैट मीन्स स्टेट्स वॉइस शुड बी हर्ड। दैट इज द रीजन स्टेट को 2/3 वोटिंग वेटेज दिया जाइए एंड डिसीजन नीड्स 75% मेजॉरिटी। बेनिफिट सिंप्लीफिकेशन आम देखीचे, कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कि पूर्व टैक्स रिजिम जो टैक्स ऑन टैक्स थिला से जगह आम बाहर की डेस्टिनेशन बेस्ड या सिंगल पॉइंट टैक्स आम करुचे, इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हम, कारण जिते सिंप्लीफाई हम टैक्स कलेक्शन से बिजनेस आसो, वाइडर टैक्स बेस आसो, बेटर कंप्लायंस वाया आईटी बेस्ड सिस्टम भी आसो। जो टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट मुझे सिंपली गोटे छोट एग्जांपल दूसरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जमी मुझे कहली हिसार रे मारुति कार प्रोड्यूस होची, मारुति कार प्लांट अच्छी, सेठी प्रोड्यूस होला सेठी आपनकर एक्साइज ड्यूटी लागिवो जेहेतु मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उपर लागे, प्लस सेठी आपनकर वैट लागिला। सेटा परचेज किए कला, सपोज गोटे डीलर परचेज कला, डीलर कौन कला सेम आपनकर एक्साइज ड्यूटी और वैट्र पैसा देलापर पुणी जो आसिक बिकुची स्टेट रे सेठी भी से वैट को इम्पोज करुच्ची, कारण स्टेट रो जो वैट अच्छे सेठी भी ऐड करा जिवो। तो ओबियसली सेठी आपन देखिए दी थर टैक्स तो लगुच प्लस तार प्राइस बढ़ी जाऊँगी, बट एठी कौन हम एठी आपनकर गोटे टैक्स लगे वन्स इट इज सोल्ड इन द मार्केट, केवल जो जगह बिक्री हम से जगह ही जीएसटी लगे। ओके, दैट इज द केस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट,
फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स कोटी हवाक जाऊँगी देखो आफ्टर दिस पहलगाम अटैक या ऑपरेशन सिंदूर पर फर्स्ट सच एमती गोटे इवेंट आम ऑर्गेनाइज करुचे विच इज डेफिनेटली ए प्रेज वर्दी विल सी the security and safety of the tourists as well as the athletes. So Khelo India Water Games Dal Lake रे organize करा जाउछे Srinagar in August 2025. Objective: promote water sports in India and scout talent for the Olympics. Sports included canoeing, kayaking, rowing, dragon boat racing and water polo. Organizer: Sports Authority of India and Jammu and Kashmir Sports Council. Significance of venue: Dal Lake is an iconic tourism and cultural site. So after this union territory, government is trying to promote economic activities, tourism activities. One of the major source जोटा कि जम्मू एंड कश्मीर अच्छी in terms of revenue or economic activities, that is the tourist or tourism. So what government is trying to do? The first time a national level water sports event is being hosted here. Symbolic integration of Jammu and Kashmir into national sports इकोसिस्टम प्रथम थर पर गोटे नेशनल लेवल वाटर स्पोर्ट्स इवेंट ये ऑर्गेनाइज करा जाउछि डाल लेक रे. नाउ फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट केरला को कहा जाइछि. फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट केरला बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट. केबे अनाउंस करा गला ऑगस्ट 2025 रे, डिक्लेयर्ड बाय द केरला चीफ मिनिस्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द केरला डिजिटल लिटरेसी मिशन. ओके, तापर केरला चीफ मिनिस्टर अनाउंस करिसेंती. कवरेज देखो, एवरी हाउस होल्ड इन केरला एटलिस्ट वन डिजिटली लिटरेट मेंबर. ये डिजिटली लिटरेट मेंबर माने कौन? सपोज यू आर यूजिंग ए स्मार्टफोन जो इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी एंड इन दैट आप देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करूँ, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, पेमेंट ट्रांजैक्शन, रिसीविंग मनी, नंबर वन. नंबर टू, जमती आम देखुचे ऑनलाइन कैब बुकिंग यू आर डूइंग. ओके, सिमिलरली डिजिटल एजुकेशन फैसिलिटीज को इंश्योर करा जाउछि. साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को प्रमोट करा जाउछि बिकॉज डिजिटली या डिजिटल इंडिया सहित गोटे चैलेंज जो आसुछि दैट इज द साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किए केरला स्टेट आईटी मिशन, कुदुम्बश्री मिशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये जो कुदुम्बश्री मिशन अच्छी ना, कुदुम्बश्री मिशन हूँ जमती आम ओडिशा रे मिशन शक्ति आम देखुचे या बर्तमान सुभद्रा शक्ति आसला से टाइप्र कुदुम्बश्री मिशन. इट्स ए काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप काइंड ऑफ मॉडल जो कि वुमेन एम्पावरमेंट सहित वुमेन मानकर इनकम को भी इनश्योर करा जाउछि. इफ यू सी द टारगेट ग्रुप होचंदी वुमेन, एल्डरली, स्टूडेंट्स, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एक्सेट्रा. Why it matters? First of all, bridges the digital divide. We have seen the digital divide exist between the rural and urban, between the privileged section, deprived section. तेणु जदि फर्स्ट डिजिटली लिटरेट या लिटरेट स्टेट होची, that means almost every household, at least one individual must have the digital knowledge or digitally literate, and it will support the digital infrastructure as well. Digital infrastructure in the sense कौन ना, जमती यूपीआई हेगला, आपनकर डिजी यात्रा हेगला, डिजी लॉकर हेगला, आधार इनेबल्ड सर्विसेस हेगला, ये सब. एंड इट विल एनहांस द ई गवर्नेंस एज वेल. जमती आम कहे सब्सिडीज गुड़ी को आम एमती इनडायरेक्ट ट्रांसफर न करिए आम डीबीटी करवा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिंपली स्ट्रेट टू द बैंक अकाउंट. सो दैट विल एनहांस द ई गवर्नेंस एज वेल. एवं जो टारगेट बेनिफिशियरीज को ही हमें पेमेंट करें. इफ यू सी द सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट improves the financial literacy, employability and digital entrepreneurship as well. Model for other states. Obviously other states can take the example of Kerala, and they can also implement this thing in their state as well. Polavaram project is related to Odisha. देखिए Polavaram project. Biju Janata Dal has urged the union government to re-examine environmental and technical clearance granted to the Polavaram irrigation project in Andhra Pradesh. ये हूँ आंध्र एवं ओडिशा भितर जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट अच्छी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, विथ रेस्पेक्ट टू द बॉर्डर, एंड दिस इज रिलेटेड टू द रिवर. ओके, द प्रोजेक्ट में सबमर्ज लार्ज एरियाज इन ओडिशा. देखिए कौन डिटेल रे व्हाट इज पोलोवरम प्रोजेक्ट.
पोलवरम प्रोजेक्ट इज सिंपली ए डैम कही परिबे आपण ये हूँ मल्टीपर्पज डैम एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स कि फॉर एग्जांपल मल्टीपर्पज डैम जमती हीराकोट डैम इट्स अ मल्टीपर्पज डैम. So what are the main features of these dams? Number 1, irrigation. Number 2, flood control. Number 3, energy production. Number 4, let's say fishing. Okay, ये सब जिनस multi and supply of water to the industries or households. So these are the multi-purpose dam. So Polavaram project is also a multi-purpose irrigation project. कोठी build कराई एटा मन रखता गोदावरी river. Okay, एटा को करा जाइए गोदावरी river. समीर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप हो जी आपण देखंतु एप्लिकेशन बेस्ड जो स्टार्टअप गुड़ी को आमर अच्छी जदि डिजिटल इंडिया न था एप्लिकेशन ओरिएंटेड फोन आमर न था इंटरनेट फैसिलिटीज न था आई थिंक ओला उबेर भी चल न था आई थिंक स्विगी जोमेटो चली न था आई थिंक ई कॉमर्स या क्यू कॉमर्स चली न था राइट दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल इंडिया ओके फोन रो साइज आप देखो बढ़ी बढ़ी चलची ये सर नो कारण फोन गोटे फीचर फोन थिला जो किसी कीपैड टाइप रो थिला एवं गोटे बहुत छोटो डिस्प्ले थिला जो कि बहुत अटेंटिवली देखले जाए कि आप रीड करि परिबे धीरे धीरे फोन रो साइज बढ़ी बढ़ी चलला फोन रो यूजेबिलिटी भी बढ़ी बढ़ी चलला वी हैव मल्टीपल यूज ऑफ फोन्स केवल फोन रिसीव करवा नुहे या मेसेजिंग करवा नुहे वी हैव मल्टीपल सच गवर्नमेंट जदि आपण कहिबे चली दैट इज पॉसिबल थ्रू फोन्स कारण गोटे नुआ ऑर्डर सर्कुलेट करिवार अछि हमें सिंपली कोथरे करूचे गवर्नमेंट तार जो ट्विटर हैंडल अच्छी सरकारी ट्विटर हैंडल से पोस्ट करूचे दिस इज द न्यू ऑर्डर राइट तेणु जो एंटरप्रेन्योरशिप जो अच्छी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप माने हूँ से जो डिजिटल बेस्ट जो स्टार्टअप गुड़ी को ओपन हो सर्विसेस रिलेटेड एप्लिकेशन गुड़ी से गुड़ाक ही कहुच्छे एनीवे स्टेटस देखो डिक्लेयर्ड ए नेशनल प्रोजेक्ट इन 2014 फंडेड बाय द सेंटर बेनिफिट्स कौन ये तो इरिगेशन कर 7.2 लाख हेक्टर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई दैट इज 540 विलेजेस हाइड्रोपावर जनरेशन एज वेल 960 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन भी करा पारिबो इश्यूज कौन देखो बोथ ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जोटा इश्यू रेज करूछंती दैट इज सबमर्जेंस ऑफ ट्राइबल विलेजेस एंड फॉरेस्ट लैंड ये हूँ गोटे प्रॉब्लम सबमर्जेंस ऑफ ट्राइबल विलेजेस एंड फॉरेस्ट लैंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फेस डिस्प्लेसमेंट कारण जो मैंने लो लाइंग एरियाज रे से डिस्प्लेसमेंट हवा स्वाभाविक कहीं द रीजन हूँ once there will be surplus water in the dam obviously they will open the gate and once they will open the gate the low lying areas will get the flood so obviously you have to evacuate them that means permanent solution would be there they would face the displacement and case pending in the Supreme Court that is Odisha and Chhattisgarh challenging the clearances okay तेणु ये जिनसटी अच्छी बट से बीजेडी या पुराना सरकार जी आपंकर थिले से अपील कर सेंटर को कि एटा को रिकनसिडर करा जो एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल राइट्स जब देखिए वायोलेशन अलेज्ड अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एंड पीसा एक्ट 1996 लैक ऑफ ग्राम सभा कंसेंट द रीजन हूँ जो एरिया टी अफेक्ट हम छत्तीसगढ़ खास करके साउथ ईस्ट एक्सट्रीम साउथ ईस्ट एरिया ओडिशार जोटा अफेक्ट हम एक्सट्रीम साउथ एरिया जोटा कि ट्राइबल एरिया बेल्ट आमर को अच्छी खास कर ईस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी भी जो अच्छी दे विल बी ऑल्सो अफेक्टेड आपड़ ये देखिपारे पिक्चर ये हूँ से पोलवरम प्रोजेक्ट पोलवरम डैम साइट और ओडिशार जो अंचल गुड़िक अफेक्ट हो यू कैन सी दिस ये हूँ ओडिशा आपंकर ये एरियाटी पूरा देखो ये अंचलटी पूरा अफेक्ट हम छत्तीसगढ़ भी ये अंचलटी पूरा अफेक्ट हम कारण ये हूँ आपंकर बॉर्डरिंग लाइन जाइए बिटवीन द ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ यस तो ये हूँ जिनस जोटा कि आपंकर पोलवरम प्रोजेक्ट अच्छी तेणु डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन अराउंड 1.9 लाख पीपल मे बी डिस्प्लेस्ड सो वन सॉल्यूशन वुड बी प्रॉपर रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन
resettlement rehabilitation for other than the tribal people is quite easy, but for the tribal people is not easy because they have to sacrifice their natural habitat jota ame कहूँ ना, because generations after generations they are living in that forest area, so they are living in a particular area. So if they are leaving that place and going to settle in a particular area, that means ये type of trauma, cultural trauma, mental trauma, ये सब type of trauma ही पर tribal मानक पाए. So it's not that easy for the tribal people to rehabilitate and resettle in a new place. Technical and safety concern देखिए, questions raised about the dam design, seismic risk and potential for the flooding downstream. Constitutional legal angle देखिए 262, Parliament has the power to adjudicate Interstate Water Dispute Act 1956 रे भी जोटा हमर थिला वाटर डिस्प्यूट एक्ट को नेकी ताकू भी एक्सरसाइज हमें करि पारू जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करिबा पई. ऑल्सो एनवायरमेंटल अप्रूवल भी दरकार, जमती एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दुईटा कर दरकार. कहीं in this project or with respect to this project forest area or the reserve area would be affected, तेणु definitely आमे या through रे permission या approval नबा भी निहाती दरकार. Coming to the Odisha news, Odisha leads in the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना is related to the minor irrigation facilities. माइनर और मेजर इरिगेशन कौन? मेजर इरिगेशन या आपंकर कन्वेंशनल इरिगेशन जोटा आम कहे दैट इज फ्लडेड इरिगेशन. आम आगु मन थी जमी एग्रिकल्चर लैंड अच्छे आम से मोटर पंप लगे छाड़देले, सो पूरा एरिया फ्लड होगला पानी रे. सो सी हूँ मेजर इरिगेशन, आउ गोटे हूँ माइनर इरिगेशन जोटा कि आपंकर स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन आपको आम कहे. सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जोटा 2.0 इट वाज लॉन्च्ड इन 2021-26. कहा को फोकस करुचे देखो, वाटर से डेवलपमेंट कंपोनेंट, हर खेत को पानी, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप. जो माइनर इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि कम पानी रे अधिक आउटपुट बाहर करबा. सेकंड हूँ जिते कन्वेंशनल हमरो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थिला ताको रिवाइव करबा. लेट्स से पॉन्ड, लेट्स से वेटलैंड्स, लेट्स से एनी सच छोटो डैम गुड़िक ताकू रिवाइव करबा, एनर्जाइज करबा, रीएनर्जाइज करबा. एंड आपण देखिए इंडिया इज हैविंग 48% ऑफ इरिगेशन लैंड, 52% हूँ आपंकर रेन फेड. तेणु से जगह वी नीड टू हैव दिस हर खेत को पानी. जदि हर खेत को पानी यानी कि वी एनश्योर द इरिगेशन फैसिलिटीज, तेबे आमर जो गोटे डेफिसिट अच्छी इन टर्म्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. कारण आमर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लोयर ये रोचे कारण आमर इरिगेशन फैसिलिटीज ना बोली. थ्रू आउट द ईयर वी कैन नॉट प्रोवाइड द वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पसेस. इफ दैट विल बी एनश्योर्ड वी कैन गो फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. तेणु जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वी हैव win-win situation in terms of production, in terms of increasing production, in terms of increasing export of different let's say agricultural products in the fruits, vegetables, etc. And second aspect हूँ आमर फार्मर्स इनकम को भी आम डबल करें इनश्योर करें. ओके यस, जो वाटर से डेवलपमेंट कंपोनेंट अच्छी क्रिटिकल फॉर द रेन फेड और द ड्राई लैंड फार्मिंग, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन पाई, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी. ओके ओडिशार परफॉर्मेंस देखो, ओडिशा इज 83% I mean utilizing 83% of the total funds, which is highest in India in terms of the कृषि सिंचाई योजना. Okay, implemented through the watershed development mission. ट्राइबल एंड रेन फेड डिस्ट्रिक्ट को आम फोकस करुचे, खास करके कोरापुट, कंधमाल, कलाहांडी, नुआपड़ा. ओके फोकस एरिया कौन ना सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, चेक डैम्स तैयारी करबा, काउंटर बॉन्ड्स तैयारी करबा. ओके कारण फ्लडेड इरिगेशन पाई सॉइल इरोजन भी हुए, तेणु सॉइल और वाटर दुईटी जाक आमको कंजर्व करने को पड़ो. लाइवलीहुड सपोर्ट एक तो जमी कहली मुझे आपको अल्टरनेटिव क्रॉप यानी कि डाइवर्सिफाई क्रॉप करिपरिबा.
हॉर्टिकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री ये सब को भी इम्प्रूव करा जाई परिबो एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड फार्मिंग को भी फोकस करवा साइमल्टेनियसली जोटा कि आम कोरापुट कंधमाल जो ड्राई रीजन में देखुचे खास करके मिलेट कल्टिवेशन को प्रमोट करा जाउची अंडर द ओडिशा मिलेट मिशन तो सी भी आपनकर हेल्पफुल हो पारिबो एंड ओवरऑल फार्मर्स रो बेनिफिट या इनकम को एनहांस करि पारिबो सिग्निफिकेंस फॉर ओडिशा ओडिशा पई सिग्निफिकेंस कोन फर्स्ट होउची एग्रीकल्चरल रेजिलिएंस that is enhances productivity in the rain-fed area, water security improves the groundwater recharge and drought proofing, livelihood generation of the farmers, small and marginal farmers, tribal farmers as well, and climate change adaptation, mitigating erratic rainfall impact. MCQs. Odisha achieved the highest fund utilization under PMKSY 2.0 watershed development amounting to which of the following? 83%. Polavaram project is being constructed in which river? That is the Godavari. The first ever Khelo India water games were hosted in which location? That is in the Dal Lake, Jammu and Kashmir. Okay, these are the two main questions. One is from first ever Khelo India. Another one is the first fully digitally literate state, that is Kerala. दुईटी बेसिस रे आपनकर अछि. ओके सो 23 अगस्त रु हमर फाउंडेशन बैच स्टार्ट होची जो माने चाहउछंदी प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू रोटे कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर करबा पई वी कैन जॉइन यू कैन जॉइन आवर बैच एवं बैच रे कंप्लीट गाइडेंस दिया जिवो टिल योर प्रिपरेशन तेणु कोड यूज करिवे जेएन लाइव. ओके एंड लेट मी टेल यू आपनकर दुईटी पैकेज अछि गोटे होची गोल्ड आ गोटे प्लैटिनम. गोल्ड रे आपनकर 1100 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, इंडिविजुअल मेंटरशिप, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, फुली रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच नाही गोल्ड रे. प्लैटिनम रे अछि या पर जते आपण देखियो सब प्लैटिनम रे अछि क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स मेंस रो क्रैश कोर्स, एमसीक्यूज बैच अछि, ग्रुप मेंटरशिप अच्छी, बुक्स अच्छी, रिकॉर्डेड क्लासेस अच्छी, एनसीईआरटी सब आपनकर प्लैटिनम रे अछि. प्लैटिनम रो प्राइस होची 18,999, गोल्ड रो प्राइस होची 11,999 एवं 4 इयर्स रो वैलिडिटी रहउची प्लैटिनम रे, गोल्ड रहउची 2 इयर्स रो. कोड यूज करबे जे इन लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. 23 अगस्त रो बैच आपनकर स्टार्ट होची. ओके थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. एंड टेलीग्राम चैनल को आपण स्कैन करिकी जॉइन करि परिबे. एठी आपनको पीडीएफ मिल जिवो. थैंक यू.